Good morning, everyone. Welcome you all for another video tutorial of our biology subject. Okay, and today we will be starting with another new chapter. In previous, I can say, chapters, we have covered with a chapter called as molecular basis of inheritance. We have also covered biotechnology principles and process. We have also covered biotechnology and its application. Okay, all the three chapters I have taught from NCRT book. Okay, and also please remember that, because these are the questions which normally I came across while having doubt solving session with various students, is that, sir, are these chapters there in our HSC textbook? Yes, of course they are there, but the names are a little bit different. For example, molecular basis of inheritance is called as genes, its nature and expression, but the content remains more or less the same. Okay, I can say that 99.5% the content is same of NCRT and HSC. Okay, right. So it is hardly any difference, and if there is any, we will definitely clear it out. So don't worry about it at all. Okay. Now today, before now, before starting with this particular chapter, I will make clear that what is the name of the chapter in HSC textbook, what is the name of the chapter in NCRT textbook, etc., etc., etc. Okay. So now, first, let us talk about the NCRT textbook. If you take NCRT textbook of 12th standard, there is unit 6, and in that unit 6 it is chapter number 2, and the title of the chapter is sexual reproduction in flowering plants. Okay, for all the NEET aspirants, please remember NCRT is our Bible, because out of 90 MCQs, around 85 MCQs to 86 MCQs would be asked straight away from NCRT textbook. So all the NEET aspirants, please remember it is unit 6 of NCRT, and it is chapter number 2, and the title of that chapter is reproduction in flowering plants. Okay, now coming to the HSC or Maharashtra government textbook, it happens to be chapter number 1 of your 12th standard textbook. Okay, and the title of that chapter is reproduction in lower and higher plants. Okay, now that is chapter number 1 in HSC textbook. Okay, now listen. When we talk about sexual reproduction, okay, let us first decode this entire title. When I say sexual, I am talking about male and female sexes. Okay, so wherever male and female are involved for reproduction, that kind of reproduction is called as sexual reproduction. Many biologists also say that sexual reproduction involves fusion of male and female gametes, which is observed in higher plants, also in lower plants, right? Okay, also in animals. Okay, so the first point is sexual involves male and female, or you can also say that it involves male and female gametes for reproduction. Now, what we are going to learn? We are going to learn how sexual reproduction occurs in flowering plants. Now, please remember, when I say flowering plants, we are talking about angiosperms. I repeat, we are talking about angiosperms. Okay. Now, when I say angio, angio means closed and sperma means seeds. So these are those plants, okay, who have their seeds covered by fruit. For example, mango is an angiosperm, right? Hibiscus is an angiosperm. Sapota, which is nothing but chiku, it is also an angiosperm. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है. रादर मैं बोलूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता कैसे है. ओके, अभी ये जो हायर प्लांट्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं, please try to understand this. Angiosperms are also called as higher plants. When I am talking about algae, bryophyta, pteridophyta, they are said to be lower plants. When I'm talking about gymnosperms and angiosperms, especially angiosperms, okay, we call them as higher plants. Okay, अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें एक स्पेशल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उस स्ट्रक्चर का नाम है फ्लावर। ओके, तो अगर हम फ्लावर का लिटरल डेफिनेशन देखें तो हम ऐसे बोलेंगे कि फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। शूट का मतलब है प्लांट का पार्ट। ओके, सो फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट with limited growth and this is specialized for sexual reproduction। तो फ्लावर का बेसिकली काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, जो हमारा चैप्टर है, राइट। ओके, तो पहले हमको फ्लावर के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। अभी अगर आप एक टिपिकल फ्लावर को लेते हैं, ओके, टिपिकल फ्लावर का मतलब है कॉमन फ्लावर, तो उसमें जो स्टॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। मैंने बोला टिपिकल फ्लावर। ओके, अभी ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे जिनमें शायद पेडिसल नहीं होगा, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, बट देन मैं कॉमन फ्लावर की बात कर रहा हूं तो उसमें पेडिसल होता है। ओके, तो अगर उसके स्टॉक को देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। उसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है और उसका नाम है थैलेमस, और इस थैलेमस के ऊपर फ्लोरल whorls अरेंज्ड होते हैं। आई रिपीट, on this particular thalamus floral whorls are arranged. Now listen, we have divided the floral whorls into two parts. The one which are not involved in sexual reproduction are called as non-essential whorls, या मैं ऐसे बोलूंगा कि ये लोग गैमीट बनाते नहीं हैं, so they are not forming gametes। I repeat, they are not forming gametes, therefore we will be calling them as non-essential whorl। तो सवाल है कि इनका फिर जरूरत क्यों है? इनका जरूरत है क्योंकि ये प्रोटेक्शन देते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले एक इवेंट होता है, आप लोगों ने सुना रहेगा, पॉलिनेशन, उसके लिए मदद करते हैं। ओके, बट ऑफ कोर्स ये गैमेट नहीं बनाते हैं, इसके लिए इनको हमने नाम दिया है नॉन एसेंशियल वर्ल्स। ओके, राइट, जिसमें दो आते हैं, एक कैलिक्स आता है और एक करोला आता है। 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कैलिक्स और करोला के बारे में डिटेल में पढ़ा था इन अ चैप्टर, राइट। ओके, इफ यू रिमेंबर, morphology of flowering plants, right? So calyx and corolla has been dealt in detail. Now let us come to the most important part, which we call them as essential whorls. Now, why we call them as essential? Because these whorls are involved in gamete formation. I repeat, these whorls are involved in gamete formation and therefore we call them as essential whorls. The male reproductive structure is called as Androecium. Andro here means male, okay, and the female reproductive structure is called as Gynoecium, where gyno, I hope everyone knows, happens to be a female. Okay, so a typical flower has got pedicel, which is the stalk of the flower. There is a compact mass on which floral whorls are arranged. We call that compact structure as thalamus. Then we have divided the four whorls into two basic parts, non-essential and essential. Non-essential includes calyx and corolla. The basic function of them is protection and they also, I can say, help in pollination. Okay. Next is essential whorl. Essential stands for the whorls which are involved in gamete formation. Okay, kids? And we are having Androecium and Gynoecium. So this is a typical flower ka structure. Okay. So now coming to the male reproductive structure, I have just now told you about Androecium, which happens to be the male reproductive structure. And as our chapter deals with sexual reproduction, we need to study the male and the female reproductive structure in detail. Okay. Now, the typical male reproductive structure of a flower is called as Androecium. Okay, kids? Right. And you need to remember that Androecium is made up of stamens. So now, if you remember the flower ka diagram, right? What I had labeled as Androecium was actually a stamen. So we are now interested in stamens.
There can be a single stamen or there can be multiple stamens also. Now we will just focus on a single stamen. So now when we talk about a single stamen, a typical stamen which you can see over here is made up of two parts. The part which is towards or near the thalamus is called as proximal part. Proximal का मतलब है नजदीक वाला. Okay. तो थैलामस के जो नजदीक वाला पार्ट है उसको हमने नाम दिया है फिलामेंट. ठीक है ना. और थैलामस से जो दूर है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल पार्ट, या हम उसको और एक नाम से जानेंगे एज एंथर. ओके. तो हर एक स्टेमेन में दो पार्ट्स हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल. डिस्टल का मतलब दूर, थैलामस से दूर या लंबा, उसको हमने नाम दिया है एंथर. ओके. और थैलामस के जो नजदीक है उसको मैं बोलेगा प्रॉक्सिमल, राइट. और उस स्ट्रक्चर का नाम है फिलामेंट. तो एंथर में दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट. ओके. अभी और एक पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, वो ये है कि द फिलामेंट इज अटैच्ड टू एंथर बाय अ स्टेराइल टिश्यू and this sterile tissue is called as connective. Okay kids, so as you can see in the diagram, this is one entire stamen. तो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है वो एक स्टेमेन का है, ठीक है, जिसमें एंथर है और फिलामेंट है. फिलामेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो थैलामस को अटैच्ड है. इज इट ओके? राइट. अब सुनिए, अभी हमारी इंटरेस्ट जो है वो एंथर में है. क्यों? क्योंकि एंथर फर्टाइल पार्ट है स्टेमेन का. इज इट ओके? क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स बनाता है. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन एंथर. तो हमने क्या किया, एंथर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया. ओके. तो जब भी हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो ऐसे देखा कि हमारा जो एंथर है उसको हम दो लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं. ध्यान से देखिए, ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है उसके वजह से हमारे एंथर को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. ओके. सो दिस पार्ट इज सेड टू बी लोब 1 एंड दिस पार्ट इज सेड टू बी लोब 2. सो आई विल से दैट माय एंथर इज बाइलोब्ड. इज इट ओके? राइट. तो एंथर के दो लोब्स हैं, लोब 1 एंड लोब 2. सेकेंड पॉइंट, अगर हम हर एक लोब को देखते हैं तो इसमें वापस दो सैक दिखती है या बैग दिखती है. इज इट ओके? राइट. इस सैक को हमने नाम दिया है पोलन सैक. इसको पोलन सैक बोलने का कारण यह है कि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं. तो यू कैन क्लियरली सी दैट ईच लोब हैज गॉट टू सैक्स. सो इन द सेम मैनर हियर आल्सो देयर आर टू. सो कैन आई से पूरे एंथर में टोटल 4 सैक्स हैं. अभी सैक जो है वो अंदर से खाली होती है, इसके लिए हमने इसको और एक नाम दिया है लॉक्यूल. सो वी से दैट एंथर इज टेट्रालॉक्यूलर. लॉक्यूल का मतलब है खाली जगह. ओके. ये स्टार्टिंग में खाली है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, फिर वो फटेगी तो वापस वो खाली हो जाएगी. इज इट ओके? राइट. तो ऐसी टोटल 4 जगह है. Therefore, anther is called as tetralocular. Many people call this khali jagah as a chamber. So we can say that a typical anther has got 4 chambers. Is it okay? And as I told you, this particular area is called as pollen sac. So there are total 4 pollen sacs. Okay. Now listen. We call pollen grain as microspore. I repeat. The pollen grain is called as microspore. So in that manner, can I say our anther is tetra microsporangiate. Tetra means 4, microsporangium का मतलब है बैग जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनने वाले हैं. तो ऐसी 4 बैग्स हैं, इसके लिए हमने इसको नाम दिया टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट या माइक्रोस्पोरेंजियम. इज इट ओके? वेरी क्लियर. अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हम दो सैक्स को देखेंगे तो दो सैक के बीच में एक छोटी सी लाइन हमने ड्रॉ की है और इस लाइन को हमने नाम दिया है लाइन ऑफ डिहाइसेंस. व्हेन आई यूज द वर्ड डिहाइसेंस, तो डिहाइसेंस का मतलब है टू ओपन. ओके. सो द एंथर नॉर्मली ओपन्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया and therefore this is called as line of dehiscence. Now you may ask me like why this line is important. This line is important क्योंकि यहां से एंथर ओपन होता है
और पोलन ग्रेन्स वहां से रिलीज होते हैं. Therefore, this point is called as line of dehiscence. Is it okay? Now, अभी हमको ये जो एंथर है उसका डिटेल यानी इसका अंदर का जो पार्ट है वो पढ़ना है. Is it okay, kids? So now coming to the actual structure of anther, or rather I can say a matured anther. Okay, so this diagram is very important from your HSC point of view. Okay, this is said to be TS of anther, that is transverse section of a mature anther. Okay, now whenever we talk about a mature anther, you can clearly see that there are 4 parts. Okay, or many people say that the anther wall consists of 4 parts. The first part is said to be epidermis. Now, as the name suggests, epi stands for above and derma is nothing but skin. So the outermost common skin for the entire anther consists of flattened cells. I repeat, it is the common wall for the entire anther, as you can see in the diagram, right? And it consists of flattened parenchymatous cells. Okay, kids? Right. So this is our epidermis, or the first part of the anther wall or anther. Okay. The second part, which is very important, and it is inner to the epidermis, and again, if you see properly, is common for the entire anther. I have represented this by the red color. Okay, so again it is single layered, and every other cell of this endothecium is made up of a special fibrous chemical called as callose. Now you need to remember that callose is hygroscopic. That means it has the ability to absorb moisture from the air. Okay. Now, if it absorbs moisture from the air, can I say it will swell and okay, it will definitely become turgid. अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे एंडोथीशियम के सेल्स एकदम थिक है एक्सेप्ट एट द लाइन ऑफ डिहाइसेंस. अगर यहाँ के सेल्स आप देखेंगे तो वो एकदम ही थिन वॉल्ड है. I repeat my statement, the cells over here are extremely thin walled. Okay, क्योंकि यहां से वो रप्चर होने वाला है या यहां से ये एंथर फटने वाला है. Therefore यहां के सेल्स एकदम थिन वॉल्ड है. So इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है that endothecium is single layered and the cells show a fibrous thickening, and this is made up of callose. And you need to remember that callose is hygroscopic in nature. Okay, all the cells are thick walled except at the line of dehiscence. तो यहाँ के जो cells हैं वो extremely thin walled है. As I told you, यहाँ से ये anther rupture होने वाला है. Okay, therefore there is no callose deposition over here. So this is the second part of our matured anther. Okay, the third part is said to be middle layer. Okay, now if you see properly, एंडोथीशियम के अंदर आपको 1 से 2 या कभी-कभी 3 भी लेयर्स का आपको मिलेगा. तो ये जो है ये मिडल लेयर कहलाता है. इज इट ओके? ये 1 से लेके 3 लेयर का हो सकता है और ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा के सेल्स हैं. नाउ आई होप एवरीवन नोज दैट पैरेन्काइमा इज थिन वॉल्ड, राइट? नंबर 1, दे आल्सो स्टोर फूड. इज इट ओके? राइट. नाउ coming to the innermost wall, which is very important, and we call this wall as a tapetum. Okay, now why tapetum is very important? Listen, tapetum consists of cells which are highly nutritious in nature. That means they will provide nutrition to the developing pollen grains. तो इस पर्टिकुलर sac के अंदर, ये sac है या चेम्बर है, मैंने पहले बताया था, बराबर? तो ये जो sac है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और इन पोलन ग्रेन्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो टेपटम देगा. इज इट ओके? और इसके सेल्स को अगर हम देखेंगे तो वो एकदम डेंस साइटोप्लाज्म से बने हुए हैं और इनके अंदर 1 से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे. तो ये मैं ऐसे बोलूंगा कि मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं. इज इट ओके? मल्टी न्यूक्लिएट का कारण है कि अगर ज्यादा न्यूक्लियस होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा कर सकते हैं और ये सब न्यूट्रिशन किसको जाने वाला है? ऑफ कोर्स पोलन ग्रेन्स को. ओके,
सो अंदर जो मैंने ये जो ब्लैक सर्कल्स निकाले हैं, they are nothing but pollen grains. Is it okay, bacha? Right. And these pollen grains, they require nourishment or nutrition which is provided by the cells of tapetum. Is it okay? And these are nothing but the जो sac है उसके अंदर pollen grains बने हैं. याद रखने का, pollen grains का और एक नाम है microspores. Okay, so the another name of pollen grain is microspores. And as these pollen grains or microspores are formed in these sacs, we call these particular sacs as microsporangium. Singular microsporangium. अगर मैं साथ में लूंगा तो इसको मैं बुलाएगा sporangia. Please remember kids, wherever you hear the word gium, gium का मतलब है sac और bag. Okay, microsporangium, पोलन ग्रेन बनाने वाली सैक या पोलन ग्रेन बनाने वाली बैग. ओके, ऐसी टोटल 4 बैग्स हैं. इसके लिए हमारे एंथर को हम बुलाएंगे टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट. ओके, या जीएम, व्हाटएवर. राइट? ओके, वेरी क्लियर. This is a very, very important thing from HSC point of view. I have also covered the important points which are not mentioned in NCERT textbook. Okay, but these are important again from NEET perspective. I want my kids to please draw this particular diagram and practice it. Okay, so there are 4 layers: epidermis, endothecium, middle layer, and tapetum. You need to remember tapetum is nutritious or nutritive tissue. It will provide nutrition to the developing pollen grain. The cells of tapetum contain more than 1 nuclei. Is it okay? Right. And inside to that, there are pollen grains. And one more important point, you need to remember pollen grains are haploid. So my microspores are haploid. Is it okay? So this is how our matured anther looks like. Okay? थोड़ा सा आगे जाएंगे and you need to remember कि जब भी सारे सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ओके, तो ये जो एंडोथीशियम के सेल्स हैं ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेंगे और वो टर्जिड बनेंगे. जैसे ही टर्जिड बनेंगे यहां के सेल्स रप्चर हो जाएंगे. इज इट ओके? राइट. और जैसे ही वो रप्चर होंगे यहां से ये पोलन सैक फटेगा और आपको अभी जो नया पोलन सैक का स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा. यू कैन सी दैट कि ये हमारा पोलन सैक फट गया है और इसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल रहे हैं. इज इट ओके? Therefore, this area is called as line of dehiscence. Remember this very, very well. तो ये जो है ये वापस आपका एपिडर्मिस है जो सिंगल लेयर्ड है. ओके, और जो डिहाइसेंस में मदद करता है वो आपका एंडोथीशियम है. प्लीज रिमेंबर द सेल्स ऑफ एंडोथीशियम विल हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर. इज इट ओके? राइट. सो दिस इज टीएस ऑफ मैच्योर एंथर. ओके, हम आगे पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं. इज इट ओके? So now the next part which we will be learning about is microsporogenesis. Okay. Now I told you that microspore is nothing but pollen grain and genesis is nothing but formation. Okay. So formation of pollen grains or microspores is called as microsporogenesis. Okay. Now listen. When we talk about immature anther, in immature anther, inner to tapetum, यानी टेप्टम के अंदर की तरफ एक टिश्यू होता है पैरेन्काइमा का, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड होता है. मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, जब भी एंथर इमेच्योर होता है तो टेप्टम के अंदर सिर्फ एक टिश्यू रहता है और इस टिश्यू को हमने नाम दिया है स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके, अभी ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये मेटामॉर्फोसिस करता है यानी उसका शेप बदलता है. राइट. एंड दिस स्पोरोजिनस टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू अ स्पेशल सेल, या हर एक सेल उसका स्पोरोजिनस टिश्यू का कन्वर्ट होता है इनटू अ स्पेशल सेल
which is called as microspore mother cell. I am repeating my statement again. Every other cell of sporogenous tissue is a potential microspore mother cell, which is also called as pollen mother cell. तो मेरे पास इसके दो नाम हैं, या तो MMC microspore mother cell और PMC. PMC का मतलब है pollen mother cell. Okay. Now, as the name indicates, this particular cell has the ability, I repeat, this particular cell has the ability to give birth to pollen grains. Okay. So, abhi, let us consider that this is our pollen mother cell, which is diploid. Okay. Now, this pollen mother cell undergoes one meiosis and it forms 4 pollen grains. I hope everyone is aware about meiosis. तो एक पोलन मदर सेल एक मियोसिस करता है और 4 पोलन ग्रेन्स बनाता है. अभी हम लोगों ने ऐसे डिस्कवर किया कि ये चारों पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक साथ होते हैं, उनको एक ही कॉमन वॉल के साथ हमने देखा था स्टार्टिंग में. ओके, तो इनको हमने नाम दिया है पोलन टेट्राइड. टेट्राइड का मतलब है 4. ओके, अभी आप देखेंगे कि सर आप तो 3 ही बता रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इफ इट इज अ 3D वन, ओके, तो आपको ये पूरा का पूरा इमेजिन करना है कि डेफिनेटली इट इज 4 सेल्स, एक पीछे की तरफ है और 3 मैंने जो है वो 2D डायग्राम में ड्रॉ किए हैं. सो ऑल द 4 पोलन ग्रेन्स आर इनिशियली टुगेदर एंड वी डेफिनेटली कॉल इट एज पोलन टेट्राइड. इज इट ओके? और ये जो बीच में है वो उसका लाइन ऑफ पार्टीशन है, और जैसे ये और डेवलप होगा या और मैच्योर होगा तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा और आपको 4 इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स मिलेंगे. और जैसे मैंने बोला हर एक पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है. इज इट ओके? और हमने इसको नाम दिया है माइक्रोस्पोर्स. नाउ अंडरस्टैंड दिस. हर एक माइक्रोस्पोर जो है उसके पास एबिलिटी है कि वो आगे जाके मेल गैमीट को बनाए. ध्यान से सुनना, एवरी अदर पोलन ग्रेन और एवरी अदर माइक्रोस्पोर हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स इन लेटर स्टेज. Therefore, many biologists call these microspores as male gametophyte. Okay, now please remember, मेल गैमीट को बनाने वाला जो प्लांट है, ऑफ कोर्स यहाँ पे वो बहुत रेड्यूस्ड है और इसके लिए हमने इसको नाम दिया है मेल गैमेटोफाइट. ओके, कुछ बॉटनिस्ट इसको अभी भी बोलते हैं कि ये कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट नहीं है. सो मेनी पीपल कॉल इट एज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. You understood why the term male gametophyte came into picture? Because this reduced plant, okay, has the ability to produce male gametes in future, and therefore it is called as male gametophyte. As I told you, many botanists call this as partially developed male gametophyte or immature male gametophyte. Okay, it is not completely developed yet. Okay, so this is how pollen grains are formed, and we call this event as microsporogenesis. Okay, very clear, kids? Right. So now we will be definitely studying about structure of a matured pollen grain. Okay, we will also be studying how this pollen grain is matured. Okay, but first let us understand how a pollen grain looks in outline. Now, whenever we talk about any pollen grain, normally they are spherical in shape. So my first point is that it is going to be spherical. Okay, right. As you can see in the diagram, it is a spherical structure. My second point is each pollen grain is around 25 to 50 micrometers in diameter. So when we talk about is size, right, it is 25 to 50 micrometers in diameter. Okay, next point. Now, whenever we talk about a typical pollen grain has a wall
and this wall is called as sporoderm. As the name suggests, sporo stands for pollen grain or microspore, and derma is nothing but the skin or the outer part. Okay, so the pollen wall is called as sporoderm. Now, in this case, the sporoderm is divided into two parts or two layers. The outer layer is called as exine and the inner layer is called as intine. Of course, as the name suggests, the outer one is exine and the inner one is intine. Now, we need to remember that exine जो है उसके अलग अलग shapes होते हैं. For example, okay, all the insect pollinated flowers would produce pollen grains with spiny exine. यानी अगर ये pollen grain है तो इसका exine जो है वो एकदम spiny होता है. अभी spiny क्यों होता है? Of course, जो insect होगा उसके body को इस pollen grain को चिपकने का है. तो of course, with the help of this spiny exine, it can easily adhere या stick to the body of the insect. Okay, so the exine can be spiny or it can be smooth. When we talk about wind pollinated flowers, हवा के साथ जो पोलन ग्रेन जाते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे ग्रासेस की, तो ग्रासेस जो है उनका एक्साइन जो है वो यूजुअली स्मूथ होता है. ओके, इट इज नॉट स्पाइनी, इट इज स्मूथ. अनदर पॉइंट, द एक्साइन कैन बी स्टिकी और इट कैन बी नॉर्मल. ओके, अभी वापस स्टिकी का मतलब है वो चिपकने में मदद करते हैं. तो मैं ऐसे बोलूं क्या, ये वापस हमको इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो है उनके पोलन ग्रेन्स में मिलेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट एक्साइन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो एक्साइन है वो एक स्पेशल केमिकल से बना है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन. नाउ किड्स, यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये टफेस्ट बायोकेमिकल है फाउंड ऑन प्लैनेट अर्थ. ऐसी आज तक कोई एंजाइम हमने नहीं देखी है जो इसको डिग्रेड कर सके. इसके लिए हमने ऐसे देखा है कि ये पोलन ग्रेन्स इवन फॉसिल फॉर्मेशन के दौरान जब भी बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी आएगा तो भी ये वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होगा. ओके, so remember there is a statement that sporopollenin is not destroyed even during fossil formation. Okay kids, right, so this is sporopollenin for you. The next, when you come inside, you can see another wall which is called as intine. And remember, intine is made up of two chemicals, number one cellulose and number two pectin. Many people call it as pectocellulose. Is it okay? Right, तो ये हो गया हमारा स्पोरोडर्म. अभी और एक बात, हमने ऐसे देखा है कि बहुत सारी जगह पे ये जो एक्साइन है वो इंटरप्टेड है. इंटरप्टेड का मतलब है वो पूरा का पूरा बना नहीं है. ओके, देयर आर स्मॉल स्मॉल पोर्स इन बिटवीन एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज जर्म पोर्स. आई रिपीट, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज जर्म पोर्स. राइट, अभी ये जो जर्म पोर्स हैं उनका नंबर स्पेसिफिक होता है. अगर आप मोनोकॉट का पोलन ग्रेन देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही जर्म पोर होगा तो हम उसको बुलाएंगे यूनिपोरेट. एंड इफ इट इज अ डाइकॉट पोलन ग्रेन you can see 3 germ pores and therefore you can use the word triporate. Okay kids, so germ pore is the gap or I can say it is an interruption of exine. Very clear? उसका क्या फंक्शन है वो मैं बताऊंगा, अभी उसका स्ट्रेस मत लेना. यूनिपोरेट इन मोनोकॉट्स, ट्राइपोरेट इन डाइकॉट्स. ओके, अभी ये जो पोलन ग्रेन है इसमें आपको दो सेल्स दिखाई देते हैं. एक काफी बड़ा वाला जिसको हम लोगों ने नाम दिया है वेजिटेटिव सेल. ओके, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है. और दूसरा जो है वो जनरेटिव सेल है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा है. So this is a typical two-celled pollen grain. Now please remember, 60% of angiosperms will always release their pollen grains in two-celled stage. The rest 40 would release the pollen grain in three-cell stage. अभी आप पूछेंगे फिर वो तीसरा सेल कौन सा है, तो सुनो ध्यान से. Listen, three-celled का मतलब है ये वेजिटेटिव सेल हो गया, राइट?
और ये जो जनरेटिव सेल है ना वो डिवाइड होता है और वो दो मेल गैमीट्स बनाता है। ओके, तो टोटल 3 सेल हो गए। ये वेजिटेटिव सेल एक, male gamete number 1 and male gamete number 2. Okay, so this is a 3-celled stage. But as I told you, 60% of angiosperms में जो pollen grains anther से निकलते हैं वो 2-celled होते हैं और rest 40% में वो 3-celled होते हैं। 3-cell का मतलब है एक vegetative cell और दो male gametes। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, these two are nothing but male gametes. Okay, and therefore this particular pollen grain is a 3-celled pollen grain. Is it okay, kids? Right. So this is a typical structure of a pollen grain or microspore. एक बार before I just proceed, spherical है, 25 to 50 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है, उसकी जो वॉल है उसको हमने नाम दिया है स्पोरोडर्म। एक्साइन जो है वो स्पाइनी हो सकता है इन द केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, स्मूथ होगा अगर वो विंड पॉलिनेटेड है तो। बहुत सारी जगह पे एक्साइन इंटरप्टेड है, राइट, और उस एरिया को हमने नाम दिया है जर्म पोर। यूनिपोरेट होगा मोनोकॉट में, ट्राइपोरेट होगा डाइकॉट में। नॉर्मली हमारे पोलन ग्रेन्स 2 सेल में रिलीज होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। ओके, 60% एंजियोस्पर्म्स में, 40% एंजियोस्पर्म्स में वो 3 सेल में रिलीज होगा, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स। ओके किड्स, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल पोलन ग्रेन। अभी देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन 2 सेल या 3 सेल तक कैसे पहुंचता है। ओके, so now let's study how this particular pollen grain is converted into a 2-celled pollen grain. Okay, अभी अच्छे से समझो। माइटोसिस के वजह से माइक्रोस्पोर मदर सेल ने पोलन ग्रेन को जन्म दिया। ओके, हमारा जो स्टार्टिंग का पोलन ग्रेन था वो हमेशा यूनिसेल्युलर था। आई रिपीट, the pollen grain initially is unicellular and uninucleate and it is haploid. Okay, now it undergoes various changes. Now the first change what we have seen is that the nucleus is now migrated, या मैं ऐसे बोलूंगा कि जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल बनना चालू हो जाते हैं। आपको दिख रहा है कि these are the 2 vacuoles which are being formed, right, and the nucleus is now shifted towards periphery. Again metamorphosis occurs, न्यूक्लियस का शेप स्पिंडल के जैसे बन जाएगा और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ फाइबर्स बन रहे हैं। ओके, और जैसे ये फाइबर्स बनेंगे तो ये न्यूक्लियस टूट जाएगा इनटू 2 न्यूक्लियाई, राइट। ये दोनों वैक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़ा वैक्यूल बनेगा। इज इट ओके? फिर एक मेम्ब्रेन बन जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अभी इसको मैं बुलाऊंगा अनइक्वल सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों सेल्स बने हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्म इन शेप एंड साइज। ओके, बोथ द सेल्स आर टोटली डिफरेंट इन शेप। One is very very small, which is called as generative cell, and the another one is very large, which is called as vegetative cell. Now if you observe vegetative cell, it contains vacuole, whereas generative cell doesn't have the same. Another difference, you can see that generative cell का जो nucleus है वो काफी बड़ा है as compared to vegetative cell का nucleus. तीसरा, ये जो वेजिटेटिव सेल है इसमें रिजर्व फूड है, जबकि जनरेटिव सेल में रिजर्व फूड नहीं है। ओके, और ये जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है ये अभी भी एंथर के अंदर है या पोलन सैक के अंदर है। इज इट ओके? और जैसे ही वो 2 सेल्ड बनेगा उसके बाद वो पोलन सैक डिहाइस होगा या मैं बोलूंगा रप्चर होगा फॉर रिलीजिंग द पोलन ग्रेन्स। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, in 60% of angiosperms, I repeat, in 60% of angiosperms, the pollen grains are released in 2-cell stage. Okay, और ये जो 2-celled pollen grain है हमने इसको नाम दिया है partially developed male gametophyte। और अभी भी जैसे मैंने बोला
कि ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट अभी भी एंथर के अंदर ही हो रहा है. इज इट ओके? सो यू नीड टू रिमेंबर कि मेल गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन है वो एंथर के अंदर हो रहा है. और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो डेवलपमेंट है इसको एंडोस्पोरिक बोलते हैं. Now, why this term came into picture? Understand this. You can see that these two cells are actually formed within the pollen grain. यानी ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोर के अंदर ही हो रहा है, and therefore this term came into picture, that is endosporic. Is it okay, kids? Now, as we saw that there were two cells in a single pollen grain, okay, and the pollen grains were released in two cell stage. Now, these pollen grains are carried either by insects or by wind, okay, and they are deposited on the stigma. We call this event as pollination. तो मैं ऐसे बोलूं क्या, जो अभी तक हमने पढ़ा था वो प्री पॉलिनेशन का इवेंट था, और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है उस पोलन ग्रेन का. ठीक है. नाउ दीज पोलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा इन टू सेल स्टेज, यूजुअली as I told you 60% एंजियोस्पर्म्स. ओके, तो ऐसा मान के चलते हैं कि वो पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज में स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हुआ. नाउ आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट स्टिग्मा. डायनोशियम जो है वो बना हुआ है कार्पेल से, और इसमें ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है. ओके, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, और हमने उस इवेंट को नाम दिया है पॉलिनेशन. सो बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स आर ऑन द स्टिग्मा. जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, स्टिग्मा एक शुगरी फ्लूइड सिक्रीट करता है. वो शुगरी फ्लूइड पोलन ग्रेन एब्सॉर्ब करता है, और उसका जो वेजिटेटिव सेल है वो बाहर निकलता है थ्रू germ pore, any one of the germ pore. Okay, I repeat. The moment pollen grains are deposited on the stigma will give out sugary fluid which is absorbed by the pollen grain. Vegetative cell will now start developing a particular tube which is called as pollen tube, and this pollen tube starts coming out from any one of the germ pore. Okay, and as it starts growing, the nucleus of the vegetative cell migrates towards the tip of the pollen tube. Okay, so you can see that I have labeled this as tube nucleus, and this tube which is formed is called as pollen tube. जैसे ये pollen tube और बढ़ता है, vegetative cell इसके अंदर चला जाता है. The vegetative cell enters into the pollen tube, and it undergoes a very important event called as mitosis. Okay, and as a result of mitosis, this generative cell divides and it forms two haploid non-motile male gametes. So you can see that in the pollen tube, the generative cell has underwent a particular event called as mitosis, and these two male gametes are being formed in the pollen tube. Okay, remember the male gametes are non-motile, they are haploid, and they are two in number. Okay, now pollen tube along with two haploid non-motile male gametes is now termed as true, or I can say completely developed male gametophyte. हमने जब भी पोलन ग्रेन को टू सेल स्टेज में रखा था तो हमने नाम दिया था उसको partially developed male gametophyte, but now pollen tube along with two male gametes is termed as fully developed male gametophyte. Is it okay? Right. और ये आपको याद रखना है, it occurs only after pollination. Okay. Now, coming to some important things. Please remember, this is from your NEET or CET perspective. Understand this particular thing. Listen. Now, kids, let us consider I am having one pollen mother cell, okay, which is diploid. I can also call this as microspore mother cell.
right? Now you call it as PMC or MMC, it is always going to be diploid. Now this pollen mother cell will undergo an event called as meiosis. And as a result of meiosis, or I will say, chalo now, one meiotic division or one meiosis, and this results in formation of 4 pollen grains. ठीक है, या मैं इसको बोलूंगा 4 microspores. Now we all know that meiosis is reductional division. Therefore, each pollen grain which is formed is haploid. Is it okay? Abhi listen up. For calculation purpose, I repeat, for calculation purpose, एक meiosis से हमको 4 pollen grain मिलते हैं. Therefore, मैं ऐसे बोलूं क्या, अगर मेरे को एक pollen grain बनाने का है, तो मुझे 1/4 meiosis करना पड़ेगा, या मैं ऐसे बोलूंगा 0.25. Remember this, kids. So for formation of one pollen grain, you require 1/4 meiosis or 0.25 meiosis. अभी आप लोग बोलेगा अरे सर ये ऐसा कैसे आया, 1/4 कैसे होगा? So as I told you, it is only for calculation purpose. For example, if they ask you, if I want to form 100 pollen grains, okay, तो कितना meiosis चाहिए? तो आपका आंसर होगा 25 meiosis चाहिए. आप समझ रहे हो? राइट, तो ऐसे सवाल आते हैं. क्लियर है किड्स? राइट, तो ये एक पोलन ग्रेन का हो गया ना. अभी वो लोग थोड़ा सा आगे भी पूछते हैं ना. कैन आई से वन पोलन ग्रेन which is haploid undergoes 2 mitosis. बराबर. अभी तो मुझे सर कैसा 2 माइटोसिस? तो इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट पोलन ग्रेन का एक बार माइटोसिस किया था, तो आपको 2 सेल्स मिले थे, एक जनरेटिव और एक ट्यूब. उसमें से जनरेटिव सेल ने वापस एक बार माइटोसिस किया और 2 मेल गैमीट्स बनाए, या मैं ऐसे बोलूंगा मेल गैमेटोफाइट बनाए. ठीक है, जिसमें 2 मेल गैमीट्स हैं. नाउ अगेन इफ दे आस्क यू कि मेरे को अगर 100 मेल गैमेटोफाइट बनाने हैं तो कितने माइटोसिस चाहिए? तो ऑफ कोर्स एक मेल गैमेटोफाइट के लिए 2, तो 100 के लिए 200 होगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. तो रिमेंबर, एक पोलन ग्रेन 2 बार माइटोसिस करता है और एक मेल गैमेटोफाइट बनाता है. इज इट ओके? तो ये 2 माइटोसिस पॉइंट याद रखना. सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पोलन मदर सेल से लेके मैं ऐसे बोलूं क्या, मैंने एक मियोसिस किया और 2 माइटोसिस किया. राइट. अभी अगर मैं सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन की बात करता हूं तो मैं ऐसे बोलूं क्या, मैंने 1/4 मियोसिस किया और 2 माइटोसिस किया to form 1 male gametophyte. Okay, this calculation will be useful when you come across some numericals of this particular type. Okay kids, please remember, try to solve the MCQs. Okay, right. So today we have studied development of male gametophyte. We have studied the structure of pollen grain. We have also studied the structure of TS of anther and also the structure of flower. Okay. In the next lecture, we will be talking about development of female gametophyte. Okay. As we are talking about sexual reproduction, therefore it is very essential that you all should be aware how the male and the female gametophyte is developed. Okay kids? Ciao. Bye.